अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मिलते हैं हमारी न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गेम किस तरह से खेलनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी से अपडेट देता हूँ। लाइक देखो, कोड पहले नहीं आ रहे थे, सारे कोड सेल हो चुके थे, क्योंकि मैंने जब पहला वीडियो बनाया तो उसमें से सारे कोड सेल थे। ठीक है, तो अभी देखो 12-1 बजे ये कोड ऑनलाइन हुए हैं, तो मैंने अगेन उसी वक्त मैंने पोस्ट कर दिए कि आप अभी कोड ले सकते हो, जल्दी से वो कर लो, अपना रेफरल कोड ले लो। और हल्का सा डेमो मैंने दे दिया गेम का, कैसे करना है ये थोड़ा बता दिया। अब चलते हैं कि डिस्कवरी वाली गेम हमें किस तरह से खेलनी है। चलो मैं ओपन करता हूँ अपना ये गोड्स वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये भी आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब ये मेरा मिशन दूसरा होगा इसमें। ठीक है, करना क्या है, इसको क्लिक करना है और आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ से परमिशन दे देना। ये लोकेशन ऑन कर दी, और मे भी मेरा वॉइस कम आए, लेकिन मेरे खेलने से आप देखना, क्योंकि वहाँ पे गेम में ऑलरेडी उनका वॉइस होता है, तो वॉइस पॉसिबल है ना आए आपको। तो यहाँ पे डिस्कवर में जाते हैं, लेट्स सी गेम स्टार्ट होए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो कलेक्ट करनी है। ठीक है, पहले वाले में अब ये हम जाते हैं यूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा बंदा सी। ठीक है, प्रोफाइल को क्लिक किया हमने। अब थोड़ा आपको मूव करना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ से आपको थोड़ा मूव करना होता है। ठीक है, आपका प्लेयर यहाँ पे लैंड करेगा थोड़ी देर में ही। ठीक है, सी प्लेयर हमारा लैंड कर चुका और गेट में चला गया। ठीक है, गेट में जैसे ही इन हुआ तो अभी दोबारा से ये स्टार्ट होगा। देखो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा पहली वाली गेम में। अब आपको यहाँ से कलेक्ट करने हैं टोकन। अब टोकन कौन से, ये एमपी देखो। The word Karakol, police station, has always intrigued me. Karakol was used in the sense of vanguard. The modernization period also required the execution of public services in a modern and orderly manner. The abolition of the Guard of Janissaries in 1826 brought along new quests for security services. In 1881, an independent unit different from the military institutions was established under the name of Istanbul Police Directorate. Depending on this unit, it was decided to establish police stations for the locations where the population is concentrated and for the points where public order incidents occurred frequently. The location of the police stations was determined in relation to water constructions, religious, official, and commercial buildings, and these places were located at the focal points of daily life. The Taksim police station as well, you see here, was located in Taksim, one of the busiest points in 19th century Istanbul, and was named Taksim Karakolhane, as seen in the documents. The architectural features you see in Taksim police station are quite sophisticated and match the features of other police stations of the period. Of course, the 19th century architectural style revealed itself in almost all public buildings. The most important facade feature, marble columned entrances made in Tuscany style. The number of columns is 2 or 4, as in the one-story police station, in other words, in Taksim police station. Settlement in Beyoğlu. The word Karakol, police station, has always intrigued me. Karakol was used in the sense of vanguard in the 17th and 18th centuries, and was also mentioned as thin karavol in the sources. In the 19th century, that is, in the Ottoman. Regretfully, I have to remark that the architectural change that took place in Beyoğlu this century was the result of a great fire. Following the 1870 Beyoğlu fire, the interest in wooden buildings in Istanbul decreased, and the interest in stone structures resistant to natural disasters such as fire and earthquakes increased. The modernization period also required the execution of public services in a modern and orderly manner.
The abolition of the Guard of Janissaries in 1826 brought along new quests for security services. In a settlement in Beyoğlu, and therefore around Taksim, became quite dense in the 19th century. The need to increase public order, municipal services, and public services increased the visibility of the state on the public, triggered the development of a new type of civic and public architecture. People living here other than you may also be seeing for the first time some of the ये हमारे दिखाऊंगा, ये देखें मेरे पास अभी 10 कॉइन हो गए, एनर्जी मेरे पास 0। आपको ये जो सामने जगह मिल रही है, यहाँ पे आपको टोकन मिलेंगे। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे टोकन मिलेंगे। ये दूसरा वाला बहुत मुश्किल है ना, तो इसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो इसको तो मैं आपको अभी थोड़ा स्किप करवाऊँगा, क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा खुद। बाकी जो है दूसरा जो पहला वाला था, उसके बारे में मैं बहुत जल्द आपको बता दूँगा, बहुत जल्द, कि वो किस तरह से आपको कलेक्ट करनी है। वो भी ऐसे ही कलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें ये आपको मूव नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपका बंदा जो भी होगा वही मूव करता है, ठीक है, तो वही मूव करेगा। अब ये मैं कंप्लीट करके देखता हूँ क्या सीन है इसका। Has always intrigued me. Caracol was used in the sense of vanguard in the 17th and 18th centuries and was also mentioned as thin caravel in the sources. In the 19th century, that is, in the Ottoman sources of this period, the word was used as a caragol or caracol. In the early periods, the caracol generally defined infantry and cavalry soldiers who were tasked with guarding the armies surrounding in order to be protected from the sudden attacks of the enemy. Afterwards, like the building we stand in front of, police stations were built in order to provide security in cities and towns in which soldiers or police officers were appointed. Before the century we have been to, in Istanbul, under the responsibility of head of the Janissaries provided security by touring around the city in turns. The responsibility of locations like Beyoğlu was given to high-ranking officials such as Topçu Basha, chief artilleryman, Cebici Basha, chief armorer, or Bostancı Basha, chief gardener. Beyoğlu was under the responsibility of chief artilleryman, namely Topçu Basha. But what happened that security had passed from the Janissaries to the Zaptiehs, that is to say,